welcome to the class. I am Shriti Sharma. Alright, so my code is Sharma ji, by the way. Okay, now before we proceed, let me tell you about this scholarship as well for 2021 droppers, where you get 30% scholarship for 80% and above. Also, so today, right now, we are going to do vocabulary, some difficult ones in the beginning, and later on we'll move on to some easy ones in reverse order today. Let me just see if I'm probably live or not. Alright, looks like I am. Good evening, Ankit. Hi, Ishita. Hope you're doing well. चलिए तो जैसा मैंने कहा थोड़ा आज उल्टा करें अभी इसलिए उल्टा करें बिकॉज इट्स pretty late in the night. तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं और इजी क्वेश्चंस बाद में ताकि when you are more tired, then you don't have to look at difficult questions. Then you will be coming across easier ones. तो ये थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं. तो एक बार सेंटेंस पढ़िए कॉन्टेक्स्ट देखिए and see what makes sense here. One of the goals of the Spanish conquistadors was to dash the Native Americans to the Catholic faith. तो यहाँ पे आप हिंट देखिए उनका गोल्स था one of the goals was to dash the Native Americans to the Catholic faith because the Spanish believed that natives who converted would have their souls saved from eternal punishment. यानी कि यहाँ पे क्या आएगा because the Spanish believed that natives who converted. तो बेसिकली ऐसा ही है कुछ was to convert the Native Americans to Catholic. कुछ convert जैसा ही word आना चाहिए, right? So among the options we have to see what kind of a word is similar to convert. Like out of the options, which one seems to be similar to something like convert? What do you guys think? Which words do you know the meanings of here? क्या लगता है? या फिर elimination? Okay, Raghav is saying it's A. You went with selection or elimination? Proselytize A का मतलब होता है to convert from one religious faith to another. That's why I was waiting. कि A का मीनिंग बताते ही आंसर आ जाता आपको और अगर मैं उल्टा शुरू करती E then also you'd have guessed that why is she starting from the end. यानी कि आंसर यही होगा. तो या इसका मीनिंग लिखिए to convert. Proselytize is actually uh, to convert from one religious faith to another. लिख लीजिएगा. कोई भी कन्वर्जन को प्रोसेल्टाइज नहीं कहते हैं. Conversion of religion को कहते हैं. To convert from one religious faith to another. All right. Okay, you went with selection. That's great. Knowing the meaning, perfect. Hinder का मतलब क्या होता है? To create an obstacle. पर यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है. To hinder them to Catholic. We know कि blank में convert जैसा वर्ड चाहिए. तो hinder का मतलब क्या होता है? To create an obstacle to prevent from doing something. To create an obstacle or to prevent somebody from doing something. Hinder वैसे I think this week or last week we have discussed. Suppress क्या होता है? What is the meaning of suppress? Hello करना है. Suppress is to put an end to maybe the activities done by somebody or someone. To put an end to, like it can be, you can suppress somebody's actions, you can suppress somebody's thoughts, you can suppress somebody's faith as well. So kind of put an end to, similar to oppress, dabana is what suppress is. Put an end to. Right. Put an end to.
Prostrate का एक मीनिंग होता है to reduce to submission or to reduce to weakness. If you prostrate someone, then you have reduced them to submission. You know, उनसे हार मनवा लिया आपने. So that's one of the meanings of prostrate. To reduce to submission or to reduce to weakness. To reduce to submission or to reduce to weakness. Is there any other meaning of prostrate? बताइए. Any other meaning? To reduce to submission is like किसी को आपने हार मनवा दिया, है ना? So that's one meaning. और क्या meaning है prostrate का? Any other meaning? Okay, it's also like, okay, prostrate is also like a position, you know, like lying flat, face down. That kind of a position is also prostrate. Many people, you know, when they visit temples or places of worship, then they sometimes हो जाते हैं ना God के idol के सामने एकदम कभी-कभी लेट जाते हैं, face down. So that position is also prostrate, lying flat, face down. Right. Coerce is to force someone to do something, to compel or to force someone to do something. D आंसर नहीं होगा because to reduce to submission में तो फिर to the Catholic faith यहाँ पे fit नहीं हो रहा है grammatically. The conquistadors, one of the goals was to, अगर आप कहो to reduce the Native Americans to submission, फिर to the Catholic faith doesn't make sense. और आगे लिखा भी है ना कि convert करना था. हार मानने का यहाँ फंडा नहीं है, यहाँ कन्वर्ट करवाने का फंडा है. हार मानने के लिए तो सेंटेंस बहुत ज्यादा आपको चेंज करना पड़ जाता है. Coerce is to force someone to do something. He was coerced into making the phone call. He was forced into doing that. Alright. I hope all of you have written these down. Like I said, fill in the blanks के questions बस थोड़े हैं जिसमें आपको थोड़ा लिखने लिखने का मौका मिलेगा. उसके आगे काफी easy questions हैं. Next देखिए, the criminal having been found guilty expected to be punished for her crimes, but she did not expect to be dashed and was shocked by how severe her sentence actually was. Okay, okay. Context समझिए, the criminal having been found guilty expected to be punished, but she did not expect to be dash में क्या आएगा नहीं समझ आ रहा है पर आगे बढ़ के समझ आ रहा है and she was shocked by how severe her sentence actually was. So she expected to be punished, but she did not expect to be, I think, so severely punished. So something like this, no? Shadow answer. Because she was shocked by the severity of her punishment. So something that can be close to a severe punishment would be your answer. तो चलिए देखते हैं. आई एम लुकिंग एट यू नो योर चैट्स की अगर सिलेक्शन या फिर एलिमिनेशन. Any idea what do you guys think? Of course, Harsh, you can do MBA after your BA. Definitely you can. What are you doing your BA in? आप किस में कर रहे हैं? बैचलर्स के बाद MBA डेफिनेटली कर सकते हैं, of course. Okay, I see only one comment here. In terms of the answers, so yes, Tanmay is saying D and E are eliminated. E का मतलब होता है praised. जिनको पता है सही अच्छी बात है और जिनको नहीं पता है think about that, no? Applaud सुना होगा आपने.
यू नो गिव अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज, वो तो होता है खड़े होके ताली बजाओ, बट अपलॉड होता है प्रेज करो, है ना, प्रेज करना। वैसे ही LAUD, लॉर्ड ऑल्सो मीन्स प्रेज, एंड इसको पास्ट टेंस में कर दिया तो प्रेज्ड हो गया, so that's eliminated. And disciplined eliminate इसलिए हो रहा है क्योंकि disciplined of course can mean punished, but हमको सेंटेंस से क्लियरली आइडिया मिल रहा है कि ब्लैंक में केवल पनिशमेंट नहीं आ सकता है, सिवियर पनिशमेंट चाहिए, क्योंकि एक क्रिमिनल को एक्सपेक्टेड था कि पनिशमेंट मिलेगा, पर क्या एक्सपेक्ट नहीं था ये तो नहीं कह सकते ना, एक्सपेक्टेड था पनिशमेंट मिलेगा पर एक्सपेक्टेड नहीं था कि पनिशमेंट मिलेगा, डजंट मेक एनी सेंस। एक्सपेक्टेड था पनिशमेंट मिलेगा पर इतना सिवियर मिलेगा वो एक्सपेक्टेड नहीं था, दैट इज व्हाट शॉक्ड हो, right? So disciplined would not go because it's simply punishment. It does not mean disciplined. Disciplined में देखिए punishment भी हो सकता है, डांटना भी हो सकता है, but definitely it doesn't convey the higher degree of punishment. So yes, D is eliminated. Technology and viral news. What's your name? Harsh, what are you doing your BA in? I'm just asking. ऐसा कुछ है नहीं कि उससे कोई फर्क पड़ेगा, बीए कर रहे हैं तो आप क्लियरली एमबीए दे सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली राइट योर एमबीए एंड गेट एडमिशन, बट स्टिल आपका किस स्ट्रीम में चल रहा है बैचलर्स? ओके, टू ऑफ यू आर सेइंग आंसर इज एक्सोनरेटेड। देखते हैं, रिप्रूव्ड का मतलब भी होता है डांटना, तो पास्ट टेंस में हो जाएगा स्कोल्डेड, आई मीन पनिशमेंट एक्सपेक्ट करे। हेलो, व्हाट हैपेंड? या, नाउ इट्स फाइन, नाउ इट्स फाइन। I have given the meanings of all the words here, so I'm moving on to the next slide. But all right, okay. तो हमारा आंसर था scourged. Moving on to the next one. Quite a lot of words. आपको सारे words और उनके meanings लिखते रहने हैं. And why is the internet misbehaving? All right. Abraham Lincoln was famously known for his dash, which explains why he is often referred to as Honest Abe. So of course, he was known for his honesty, है ना? Sentence से समझ आ रहा है. यानी कि you need a word here that means the same as honesty. That's what you need. तो अब वर्ड्स देखते हैं। मेंडासिटी का मतलब होता है डिसऑनेस्टी, लिख लीजिएगा, सिटी इज डिसऑनेस्टी। अगर यू नो यू कंटिन्यूसली कीप ऑन अटेंडिंग द वोकैब क्लासेस तो याद हो जाएंगे वर्ड्स, बिकॉज रिपीट होता है, जो स्टूडेंट्स रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे एक्सोनरेट, बहुत बार पढ़ा चुके हैं सेम वर्ड, रिप्रूव मैं कितनी बार करवा चुकी हूँ, लॉडेड बहुत बार करवाया है, स्कोर्स्ड भी कराया है पहले। ऑलराइट, तो वैसे ही यहाँ पे भी हमको ऑनेस्टी का सिनोनिम चाहिए, और जो सिनोनिम है ना वो मैंने दो कराया है क्लास में डिफरेंट क्वेश्चंस में, बट वी हैव डन इट। जो भी है, मेंडासिटी इज डिसऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग डाउन टू अर्थ, so modesty, you know, like late Dr. APJ Abdul Kalam was humble, he was known for his humility, so humility is the noun form of humble, यानी कि इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है humble और नाउन फॉर्म होता है humility। Veracity is honesty, काफी बार किया है हमने। Oh my God, is the internet again gone? क्या हो रहा है? Internet gone. Not like Dr. Abdul Kalam was humble, but it's the noun form of humble.
Yeah, the internet again, the circle have started moving. बीच में चला गया था. All right. Okay. So veracity होता है honesty. Something fell there. Veracity is honesty. Truthfulness. I think कल या परसों ये रूट फिर से YouTube पे भी किया था कि this VER, this relates to truth, है ना? तो veracity का मतलब होता है truthfulness. Truthfulness. Okay. Prevarications होते हैं again lies. Prevaricate is to lie. Prevarications are your lies. झूठ. Piety is one form of pious. Pious होता है हिंदी में कहते हैं पवित्र, उर्दू में कहते हैं पाक. इंग्लिश में सबसे ठीक ठाक वर्ड जो मिल जाए वो हो सकता है holy और pure. So piety would be holiness or purity. But purity किस सेंस में? holiness के सेंस में. ठीक है? That's piety. हिंदी में होता है पवित्र, उर्दू में होता है पाक. Alright. Pious. Pious is पवित्र और पाक. Okay, so of course हमारा आंसर है C, veracity. VER relates to truth. ये synonyms भी याद रखने हैं. Okay, देखिए जो आप नए वर्ड्स कर रहे हैं, अब क्वेश्चंस किए 15 ऑप्शन से, बट उसके synonyms भी आपको देखने हैं ना. Alright, जैसे हमने यहाँ पे देखा exonerate का acquit, exculpate, vindicate, absolve. वर मैंने कल या परसों भी कराया था एज अ रूट. अभी फिर मैं कराऊंगी बिकॉज ओनली तन्मय हैज आंसर्ड, दैट्स व्हाई. तो वर एज अ रूट इज ट्रूथ, है ना. अब इससे कुछ वर्ड्स बन सकते हैं. एक तो हो गया वेरासिटी जो यहाँ पे लिखा हुआ था विच मीन्स ट्रूथफुलनेस. देन देयर इज वेरिली, वेरिली विच मीन्स ट्रूली. देन देयर इज वेरीफाई जो कि आप सब जानते हैं, टू लाइक confirm something, confirm the truth of. Right. Then there is aver, A-V-E-R, which means to claim something to be true. Similitude, which means similar to truth, appearing true. So लिख लीजिए ये सब, write them all down. Then there is veracious, which is honest, truthful. Veracious actually, truthful or honest. लिख लीजिएगा. Yes, verdict. Verdict is a judgment. Correct. आरसी सब कवर हुआ है. और अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको यूट्यूब पे भी वोकैब के तो सारे वीडियोस देखने हैं, बिकॉज वोकैब में वन नेवर नोज कौन सा वर्ड आएगा. तो वो तो आपको जितना देख सकते हो उतना देखो वीडियोस. वर्बल रीजनिंग का जितना हमने वीडियोस बनाया है यूट्यूब पे ही, आप वो भी देखिए. रीड एंड कॉम्प्रिहेंशन आपको इजी लेवल का प्रैक्टिस करना है सीमैट के लिए, बट टाइम पे ध्यान देना है कि कम समय में आप प्रैक्टिस कर सकें. तो बेसिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो जहाँ लेवल ऑफ डिफिकल्टी LOD इजी भी हो या एवरेज हो, आप अरुण शर्मा किताब से भी कर सकते हो. लेवल ऑफ डिफिकल्टी विद इजी और एवरेज, बट कम टाइम में कर रहे हैं, जैसे 6 मिनट्स और 5 मिनट्स फॉर वन पैसेज. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये प्रैक्टिस करना है आपको. ऑलराइट, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. और ग्रामर भी आप यू कैन जस्ट वॉच द वीडियोस फॉर ग्रामर, बिकॉज जितना टाइम है उसमें मैं ये तो नहीं कह सकती कि पूरा रेन एंड मार्टिन पढ़िए. Oh God, I see the internet is misbehaving quite a lot, it seems. That I'll not say, of course. It's going to entire random Martin. तो वही है, vocab के वीडियोस देख लीजिए, वर्बल रीजनिंग के वीडियोस देख लीजिए. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा. केवल वीडियोस देख के आरसी नहीं हो सकता है. आरसी तो खुद से सॉल्व करना जरूरी होता है. वीडियोस देख के आप फंडा सीख सकते हैं आरसी का कि ओके पहले क्या क्वेश्चन देखना है, बाद में क्या देखना है,
वर्बल रीजनिंग पे क्या करना है या vocab कैसा होना चाहिए आरसी के लिए भी, बट अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। vocab का क्या होता है कि क्लास में जितना करा है वो अटेंड कर लिया, रिवाइज कर लिया तो वो भी सफिशिएंट है। ऑलराइट, so this is what you have to do for CMAT. Alright, moving on to this question. I hope VER के सारे words आपने लिख लिए हैं. Question number 4. In making the decision on whether to drop the atom bomb, President Truman attempted to dash the weapon's dash effects. Alright. Ultimately, deciding that ending World War II outweighed the harmful consequences he imagined. Consequences, harmful consequences किसके लिए था? इसके लिए था. तो ये context देखिए, making the decision on whether to drop the atom bomb, President Truman attempted to maybe gauge, maybe guess, maybe get a feel, maybe figure out the weapon's bad effects, right? Harmful effects. क्योंकि आगे लिखा है finally deciding that ending World War II outweighed the harmful effects he imagined. Okay, so maybe he attempted to imagine or guess, है ना? यहाँ से ही मैं उठा रही हूँ आंसर जो सेंटेंस में लिखा है. He attempted to imagine या फिर guess या फिर predict the weapon's negative effects or harmful effects और bad effects. अब देखना पड़ेगा पहले में. देखिए ऐसे कुछ ऑप्शन आपको मिल जाए. Maybe go by selection, elimination, whatever you feel like. I mean, whatever you know, where if you know the meanings of, let us say, A में अगर आपको benevolent का भी meaning पता है तो आप you would know whether you have to select it or eliminate it. तो आप अपना permutation combination लगा के एक बार try कीजिए, then I'll tell you all the meanings and the answers well. Nomad Bihar, what is your name? The class timings on YouTube, the class timings are 2 p.m. and 11 p.m. and YouTube पे, ठीक है? And 2 p.m. पे होता है और 11 p.m. पे होता है. और Unacademy लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जो सब्सक्रिप्शन वाले क्लासेस हैं वो 9 p.m. पे होते हैं. Then the verisimilitude is appearing to be true, but not actually true or actually true will totally depend on the context. हाँ? Appearing to be true. अब हो सकता है वो रियल में ट्रू ना हो सकता है वो रियल में ट्रू हो. वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा. जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल आई थिंक लिया था कि मे बी आई एम वॉचिंग अ प्ले एंड आई लाइक द प्ले बिकॉज इट हैज वेरिसिमिलिट्यूड, मतलब सच दिख रहा है, बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट रियल. तो वहाँ पे इट्स नॉट ट्रू. बट ये भी कह सकते हैं आई ट्रस्ट पीपल इन केसेस वेयर आई सी वेरिसिमिलिट्यूड वेयर दे अपीयर टू बी ट्रू, देन आई ट्रस्ट. अब उस केस में कुछ लोग सच में ट्रू होंगे और कुछ लोग ट्रू नहीं होंगे. both either could be the underlying thing. कुछ आंसर नहीं आ रहा है आप लोगों का, हाँ? यहाँ पे चलिए मैं मीनिंग्स बताती हूँ, उसके बाद तो आंसर बता ही देना. फोर्सी का मीनिंग काफी बार बताया है, यहाँ यूट्यूब पे भी काफी बार बताया है. फोर का मतलब होता है पहले, FORE, बिफोर. ऑलराइट. सी का मतलब होता है सी, देखना. तो फोर्सी का मतलब क्या हो गया? कोई कुछ होने के पहले उसको देखना, एज इन प्रिडिक्ट करना. हो सकता है he attempted to predict the weapon's harmful effects, तो हो सकता है. To foresee, attempted to foresee मतलब देखना कि अरे हुआ तो नहीं है ना अभी harmful effects, so is trying to gauge or guess. तो वहाँ पे fit होगा foresee. But benevolent का मतलब क्या होता है? Benevolent is kind. Ben is a positive root. Ben means good. So benevolent has a positive meaning. Okay. Presage also means to foresee. अब मैं मीनिंग्स बता देती हूँ. Deleterious is harmful. Deleterious is harmful. लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए सारे मीनिंग. Write them down.
ठीक है। प्रोग्नोस्टिकेट क्या होता है? Prognosticate is also to predict. It's that the prognosis is used uh, in medical terms actually. Predict करना. Diagnosis होता है ना, जैसे diagnosis तो होता है पता कर लेना कि क्या बीमारी है. Prognosis होता है कि जब सारे टेस्ट नहीं हुए हैं और गेस कर रहे हैं कि अच्छा क्या बीमारी हो सकता है. That's prognosis. So prognosticate is also to predict. Healthful तो सबको पता है. Everybody knows the meaning of healthful. Something that's good for health. Right. Now, Sanu, I already mentioned the class timing. यूट्यूब पे क्लास की टाइमिंग है 2 PM. क्या उस समय फिर से नेट चला गया था क्या? When I mentioned it's at 2 PM and at 11 PM. Those are the YouTube timings. On Unacademy learning platform it is 9 PM. Nashima. All right. What does it mean? Okay. Foreshadow is basically warning. Foreshadow is also when something has not happened, maybe a bad omen. Warning of a future event is foreshadow. Warning, warning of a future event is foreshadow. Innocuous is harmless. Innocuous का लिखिए harmless. All right. Innocuous is, it was an innocuous remark. It was a harmless remark. Refute is to deny or to prove something to be false. Waiting for you to write it down. You know, like to disapprove is refute. To argue against something, to deny, to prove to be false. ठीक है. And noxious जो कि परसों कराया था. बताइए noxious क्या है? कोई तो बताओ. परसों ही किया था आपने noxious. और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था noxious fumes और noxious gases. NOXIOUS है ना. nausea वाला ये नहीं है जिसमें तबीयत खराब लगती है. It's not that. It's not NAU. It's not that. It's NOXIOUS. Noxious is poisonous or harmful. Like हमने लास्ट जो एग्जाम्पल लिया था noxious fumes. Poisonous or harmful. Tanmay, foreshadowing is done by an event. Can it be a person too? We can't write like Tom foreshadowed blah blah blah. The arrival of Tom foreshadowed something bad. So it can't be directly used for a person. It can be arrival of Tom कर दिया मैंने केवल ये नहीं कह सकता Tom foreshadowed जो भी हुआ Tom foreshadowed नहीं होगा but arrival of Tom foreshadowed हो सकता है. Arrival of Tom foreshadowed the coming quarrel. और Tom's presence foreshadowed the coming events. तो अगर आप देखें तो presence डाल दे रहे हैं, arrival डाल दे रहे हैं, ये सब डाल रहे हैं तभी हो पा रहा है. डायरेक्ट एक नाम नहीं डाल सकते हैं. तो yeah, kind of an event you could say or a state of being. Yes, some kind of an event only or a state. हाँ आंसर बताइए. Anybody else? और भी कोई बताएगा आंसर? सारे मीनिंग्स तो लिख दिए हैं यहाँ पे. ब्लैंक में उसके सिनोनिम्स भी लिख दिए हैं. I think everybody should be able to answer now. Nobody else is answering. Yes, it is B. Right. क्योंकि presage हो गया to foresee, to guess, and deleterious effect would be harmful effect. Benevolent positive है नहीं होगा, helpful positive है नहीं होगा, innocuous positive है. Noxious is of course negative, but refute गलत हो जा रहा है E में. So yes, both is B. Correct. Perfect.
अच्छा, बेनेवोलेंट का मतलब है काइंड, तो ये ध्यान रखिएगा कि बेन एज अ रूट हैज अ पॉजिटिव मीनिंग, गुड। ठीक है, बेनेवोलेंट हो गया, काइंड, हैविंग अ काइंड हार्ट, हैविंग अ गुड हार्ट। बेनाइन भी होता है, BENIGN, दिस ऑल्सो मीन्स काइंड। इसका एक और मीनिंग होता है नॉट हार्मफुल, तो आप ये भी लिख सकते हो। बेन से बहुत वर्ड्स है, मैं अभी सब नहीं करा रही हूँ, मैं बस वो करा रही हूँ जिनका मीनिंग काइंड है। बेनेवोलेंट, बेनाइन, बेनिफिसेंट। बेनिफिसेंट also means kind. Radhika Tanmay has answered your question. You can simply use the website. वैसे लैपटॉप पे डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट या यू कैन यूज द वेब, आई मीन आई ऑल्सो यूज द वेबसाइट ओनली ऑन द लैपटॉप, so you can do that or you can download as well. चलिए try out this one. Fifth का C है, all right. Okay, okay, मैं saying fifth का C है. सचिन, promulgate कहाँ पे है? Promulgate तो इसमें है ही नहीं, आपने किसी का मीनिंग बताने के लिए कहा था, वो तो ऑप्शन नहीं है. Promulgate is basically when you declare something. You kind of spread some information, you declare it. That's promulgate. But इस context में तो नहीं आएगा ना. Fifth. Okay. I'm waiting for others to answer as well. Eliminate or select. Sociopaths are also pronounced as sociopaths. Sociopaths, yeah, sociopaths, are unable to feel shame for their often heinous misdeeds. Heinous is like extremely cruel. Extremely cruel, बहुत खराब. Misdeeds तो हो गया खराब काम या फिर crime. And as a result, they often shock people by their complete indifference, which is lack of feelings, lack of concern, to lack of feelings or lack of concern, to CERN, to public outrage. Public outrage is public anger. You know, extreme anger over something that, over some wrong that has been done. That's outrage, no? आउटरीच बस नॉर्मल एंगर नहीं है, आपको कुछ गलत काम हुआ है उस पर आप गुस्सा रहे हो बहुत ज़्यादा. तो आइडिया ये है कि ये जो सोशियोपैथ्स होते हैं उनको कोई शेम फील ही नहीं होता है, वो कितना भी गंदा काम कर ले, कितना भी घिनौना क्राइम कर ले, उनको कुछ शर्म नहीं आता है. और बिकॉज ऑफ विच इसका रिजल्ट ये है कि दे शॉक पीपल. मतलब पीपल आर शॉक्ड बाय व्हाट, बाय द फैक्ट कि ये सोशियोपैथ को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है पब्लिक के गुस्से से या फिर पब्लिक के डैश से. अब डैश में क्या वर्ड आएगा ये आपको बताना है, तो लेट्स सी व्हाट यू गाइस आर सेइंग. हम सारे वर्ड्स का मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं. प्राइड तो आप समझ रहे हो ना, प्राइड, गर्व in Hindi doesn't make any sense here. Veneration is higher degree of respect or honor. अब पब्लिक उनको रिस्पेक्ट या ऑनर क्यों करेगी, तो नहीं होगा. एडमॉनिशमेंट इज स्कोल्डिंग, डांट. ठीक है. एप्रोबेशन इज अप्रूवल. प्लीज राइट दिस वन. यस, yes Tanmay. Heinous is, heinous actions would be egregious for sure. Correct. Admonishment is
क्या हो गया? एडमॉनिशमेंट, स्कोल्डिंग, वार्निंग, कॉशन. ठीक है, ये लिख लिया हो तो मैं वेट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई नीड मोर स्पेस टू राइट ऑन द लास्ट वन. आई एम गेसिंग आपने जितना तो लिख ही लिया होगा. तो अप्रोब्रियम क्या होता है? अप्रोब्रियम इज लाइक पब्लिक डिस्ग्रेस over, over shameful behavior. Opprobrium is disapproval, but it's a very strong word. A public disapproval, a public disgrace incurred for outrageously shameful behavior. So opprobrium is a stronger word. एक मेरे को synonym बोलोगे तो disapproval हो जाएगा, but it's more like disgrace. Disgrace आप समझ रहे हो ना? Disgrace हो गया वो जब जनता आपको नीचा समझती है, नीचे गिराती है, that's disgrace. तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड इज अप्रोप्रियम और वही चाहिए ना, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग आइडिया मिल रहा है. सोशियोपैथ्स के बिहेवियर पे आम जनता शॉक होगी बाय देयर इंडिफरेंस टू पब्लिक. नाउ पब्लिक वुड नॉट जस्ट स्कोल्ड देम, द सोशियोपैथ्स, पब्लिक वुड डिस्ग्रेस देम कि ये क्या गंदे लोग हैं, राइट? बट सोशियोपैथ्स को तो फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का. दैट्स द आइडिया. वी नीडेड अ स्ट्रॉन्ग वर्ड फॉर एलिफेंट. और डी जो है एप्रोबेशन क्या हो गया? अप्रूवल हो गया. ठीक है. एप्रोबेशन और ऑप्रोब्रियम साथ में क्यों लिखा है? क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, दोनों वर्ड कितने सिमिलर साउंडिंग है पर दोनों का मीनिंग एकदम अलग है. सिमिलर साउंडिंग है, आप देखो डबल पी आर ओ बी दोनों में कॉमन है ना, तो इसलिए डाउट होता है बहुत बार. और ऐसा ही डाउट क्रिएट करने के लिए ना एग्जाम्स में सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी ये सारे वर्ड साथ में प्लेस कर दिए जाते हैं, तो ताकि जिन स्टूडेंट्स को आता भी है या कभी सुना भी है, इतने सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं. These are traps set for you guys in the exams. चलिए लास्ट. ऐसा नहीं है कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, आगे हम और भी कर रहे हैं पर आगे के सिंपल हैं. तो लास्ट ऑफ a slightly difficult type जहाँ पे आई हैव समथिंग टू कंट्रीब्यूट. उसके आगे तो इतना सिंपल सिंपल है कि आप ही लोग आंसर बता दोगे. नेक्स्ट देखिए. द रियलिटी शो जज was known for his dash comments. However, everyone who knew him recalled that he was never caustic. Caustic is like bitter in his personal dealings. तो ब्लैंक में किस आंसर आए या ना आए वो देखेंगे बाद में. आप मुझे बस ये बताइए ब्लैंक में किस तरह का वर्ड आएगा. गिव मी अ शैडो आंसर. फॉरगेट अबाउट द ऑप्शंस इफ यू डोंट नो द मीनिंग. गिव मी अ शैडो आंसर. पुट इन अ वर्ड ऑफ योर ओन हियर. व्हाट वुड फिट इन हियर गोइंग बाय द कॉन्टेक्स्ट. एसबी, व्हाट इज योर नेम? मैं एक्चुअली बस शैडो आंसर पूछ रही थी. ओके सिड, ऑलराइट. आपने तो आंसर बता दिया एंड क्वाइट अ फ्यू ऑफ यू गिव मी एन आंसर एंड तन्मय ने शैडो आंसर दिया है. शैडो आंसर वुड बी राइट. बिटर या फिर हार्श. कॉन्टेक्स्ट से समझ आ रहा है कि रियलिटी शो जज वाज नोन फॉर हिज बिटर कमेंट्स, क्योंकि उसके बाद एक हाउएवर व्हिच शोज कॉन्ट्रडिक्शन. एवरीवन हु न्यू हिम रिकॉल दैट ही वाज नेवर बिटर इन हिज पर्सनल डीलिंग्स, यानी उसके कमेंट्स नेवर बिटर के का ऑपोजिट होगा यानी बिटर होगा. तो विच ऑप्शन गोज विथ बिटर? सिमिलर वर्ड vituperative. Vituperative is like bitter या फिर actually more harsh, verbally abusive.
वर्बली अब्यूसिव या फिर हार्श कड़वे शब्द, ठीक है, वो होता है विट्यूबरेटर। साइकोपेंटिक या सिकोपेंटिक, सिकोपेंट इज अ चमचा, हिंदी में कहते हैं ना चमचा है, दैट्स व्हाट अ सिकोपेंट इज। एंड सिकोपेंटिक हो जाएगा चमचे की तरह, चमचा आप समझ रहे हो, नॉट द स्पून थिंग। इंग्लिश में एक्चुअली इसके लिए और भी वर्ड्स हैं, आई एम राइटिंग दैट डाउन। सिकोपेंट का मैं सिनोनिम लिख देती हूँ, हिंदी में चमचा, इंग्लिश में टोरी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोरी इश, टोरी जैसा, ऑलराइट, विच इज लाइक अ चमचा। दिस इज अ गुड वर्ड फॉर इट, हाँ। Yes, servile is like slave-like, so servile would be close to it. Yes. Hmm. फिर fawning भी होता है, FAWNING, fawning behavior. हिंदी में मैं बता दे रही हूँ, ब्रैकेट में लिख लेना चमचा। द वन हु डोंट नो द मीनिंग ऑफ टोडी, फॉनिंग और सिकोपेंट, ब्रैकेट में चमचा लिखिएगा। आंसर आपका बी इसलिए है क्योंकि हमको यहाँ पे चमचा वाला आइडिया तो चाहिए नहीं था, राइट? अच्छा, दैट्स व्हाई द आंसर इज बी। कैलमनिएटिंग आया है कैलमनी से, कैलमनी होता है किसी के बारे में कुछ गंदा इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना। कैलमनिएटिंग वुड बी द एक्शन ऑफ spreading malicious information, you know, negative and malicious तो क्या कहें अभी, खराब इरादे वाला इंफॉर्मेशन about someone is calumniating as an action, you know, making false or malicious statement, spreading malicious information about someone, malicious and false info about someone, or making false and malicious statements. आई थिंक malicious भी मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए। पहले आप ये लिख लीजिए, मेकिंग फॉल्स और malicious statements is calumniating. Making false or malicious, yes, yes, bad mouthing, correct. Anxious is ये जो D ऑप्शन है, this is like arrogant, very smug. Smug का मतलब होता है कि हम सेल्फ सेटिस्फाइड है इन अ नेगेटिव वे, जब सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए फिर भी हम सेटिस्फाइड है कि हाँ हमसे बेहतर कोई नहीं, दैट इज anxious, self satisfied in a negative way. And the last word, punitive, relates to punishment. Like किसी के लिए कहें कि what you did will lead to punitive action, that means will lead to some kind of a punishment. Alright, so punitive relates to punishment. But puny, P-U-N-Y का मतलब एकदम अलग होता है। P-U-N-Y का मतलब होता है छोटा, small, trivial, unimportant. Punitive and puny दोनों का मीनिंग बिल्कुल ही अलग है। हमारा करेक्ट आंसर है बी, विट्यूबरेटर। प्यूनिटिव आप, आई होप आपने लिखा है रिलेटेड टू पनिशमेंट, है ना। एक एकदम ही अलग वर्ड है, P-U-N-Y, विच मीन्स अनइम्पॉर्टेंट, स्मॉल, ट्रिवियल। क्यों साथ में किया, ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्यूनिटिव मैंने सिखाया, एग्जाम में प्यूनी आया, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इट रिलेट्स टू प्यूनिटिव, इट डज नॉट। अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग बताइए, आप आंसर बताइए आगे के क्वेश्चंस का। माई जॉब इज डन, नाउ इट्स योर टाइम। Zero B, is that your name? नहीं, punitive and penny are not similar. You know, penny तो of course form of currency में आ जाता है ना। मैं ये स्पेशल क्लास आफ्टर 6, स्पेशल क्लासेस का एक्चुअली कोई फिक्स स्केड्यूल नहीं है। यूट्यूब का फिक्स स्केड्यूल है और प्लस का फिक्स्ड है। स्पेशल बहुत वेरी करता है, स्पेशल क्लास जब होते हैं हम लोग लिंक शेयर कर देते हैं, बट उसका अभी कोई फिक्स स्केड्यूल नहीं चल रहा है। Crucial, yes, Ankit, very important, Tanmay, right? A, very important. Mimic is to copy, correct? 2 is D, mimic is to copy.
मिमिक्री उसी से आया है, आप सब जानते हैं, राइट? तन्मय, अंकित, परफेक्ट। डिस्टिंक्ट बताइए। सब बता दीजिए, 3 4 5 तीनों का लिखिए, बताइए क्या होगा आंसर। Good night, Shreyas. I hope you have written down the other words and their meaning. Yes, distinct is separate. Correct, Nashana. Majority, आप सब जानते हैं. Perfect. A large part. Retrieve is to bring back. Perfect. Retrieve is to bring back. Retrieve. अगर किसी को नहीं पता है तो जरूर लिख लीजिएगा. Retrieve is to bring back. Cater बताइए. The canteen caters to all the needs of the students. Cater क्या होता है? This school caters to students who face different kinds of challenges. Cater is, yes, perfect. To try to satisfy. Very good. To try to satisfy. Accentuate. Now this might, accentuate might be new for quite a lot of students. जिनके लिए new है जरूर लिख लीजिएगा. Accentuate. अच्छा, cater का मतलब होता है to try to satisfy. That's the meaning. All right. Caterers. अब ये feast to east option दिया कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि बहुत बार caterers होते हैं जो खाना प्रोवाइड करते हैं, तो हमको लगता है अच्छा feast. बट केटरर्स का भी काम होता है कि जो भी हम, वो भी वही कर रहे हैं ना, उनको जो ऑर्डर दिया जा रहा है वो सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं से आया उनका नाम. टू एक्सेंचुएट. हाँ, कंपनी है एक्सेंचुअल, बट एक्सेंचुएट क्या होता है? नहीं, इट्स नॉट डी, इट्स ए. टू मेक मोर नोटिसेबल. टू मेक मोर नोटिसेबल. The word is used for makeup a lot, you know. When makeup, when people talk about makeup or sell makeup, then they use this word. Like if they are selling some kohl, that is kajal. So वो बोलते हैं this kajal will accentuate your eyes. It will make the eyes more noticeable. Highlight करना. Alright, it's like highlighting. Accentuate is to highlight. Alright. Or this rouge would accentuate your cheeks. Alright. So that is to make more. Please write it down, to make more noticeable. Okay. लिख लीजिएगा लास्ट यहाँ पे. I mean इस स्लाइड में illicit is something which is not right. It's kind of illegal, but then you don't have any option that says illegal. तो आपने क्या मार्क किया थर्ड के लिए बताइए. Illicit is kind of illegal. तो बेस्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? जो नहीं करना चाहिए. तो बेस्ट ऑप्शन है forbidden. Alright. Allowed नहीं है. Yes, yes. Correct. Yes, Tanmay. I saw you already had written the answer. Best option is forbidden. क्योंकि जो illegal है वो forbidden है, वो allowed नहीं है, prohibited है. Right. तो मैं देख रही हूँ for some of you of course accentuate भी नया था, illicit भी कुछ लोगों के लिए नया है, तो देख लीजिएगा. Commotion बता दीजिए क्या है, और commotion का synonyms बताइए. यहाँ पे meaning बताइए आंसर, and give me some other synonyms for commotion. Yes, correct हमने. 4 is D, a state of disturbance. Synonym बताइए, मतलब give me some other words for commotion. और आप सबको लिखना है, हाँ,
state of disturbance is commotion. सिर्फ आपने जो बी मार्क किया है स्टेट ऑफ ऑनरिंग और प्रेजिंग आई थिंक कमेमोरेट आपने सोचा दैट्स अ डिफरेंट मूवमेंट दैट्स अ डिफरेंट वर्ड आई एम सॉरी मूवमेंट मैंने यहाँ पढ़ लिया आपने लिखा था तो नहीं दैट्स अ डिफरेंट वर्ड कमेमोरेट इज अ डिफरेंट वर्ड commotion is different which means a state of disturbance उसका एक synonym है chaos chaos होता है commotion is chaos alright lack of order जहाँ पे order ना हो disorder हो chaos हो लिखिए chaos लिखा आपने disorder लिखिए lack of order sorry disorder एक और synonym लिखिए pandemonium pandemonium is chaos yes so the anarchy is like lack of proper order right so yeah anarchy का एक feature होता है that there is chaos there there's no proper ruler or there's no proper order and example में yes Afghanistan works there is chaos in Afghanistan you know what in fact I'll tell you ironically pandemonium जो word है जिसका मतलब है disorder और chaos uh, इसका एक पुराना मीनिंग है जो कि अब रेलेवेंट नहीं है ओल्ड इंग्लिश में इसका मीनिंग था पैंडेमोनियम का एक मीनिंग था हेल द प्लेस वेयर ऑल डेविल्स लिव और आपने एग्जाम्पल भी दे दिया अफगानिस्तान का kind of has become hell no with what's happening presently so that's very ironic and कि आपने ये एग्जाम्पल दिया और पैंडेमोनियम का एक्चुअली एक ओल्ड मीनिंग है प्लेस वेयर डेविल्स लिव nonetheless chaos is like अफरा तफरी हिंदी में कहें तो अफरा तफरी एक मान लीजिए क्लास है बच्चों का क्लास 2 के बच्चे हैं और सब सब चिल्ला रहे हैं दौड़ रहे हैं एक दूसरे का बाल खींच रहे हैं तो इवन दैट इज केओस ओके कोवर्ट बताइए व्हाट्स द आंसर या डीमंस एवरीवेयर राइट कोवर्ट बताइए व्हाट डज इट मीन कोवर्ट ऑपरेशंस कहते हैं ना मूवीज में सीरीज में बहुत सुना है स्पाई के सीरीज जो होते हैं एस्पियोनाज थ्रिलर्स यस सीक्रेट कोवर्ट इज सीक्रेट और इसका ऑपोजिट होता है ओवर्ट विच इज नॉट हिडन विच इज ओपन इसका ऑपोजिट होता है एंड कोवर्ट इज सीक्रेट और हिडन यस कोवर्ट मिलिट्री ऑपरेशंस तो दे आर द सीक्रेट ऑपरेशंस विच आर हिडन एंड उसका ऑपोजिट हो गया ओवर्ट विच इज नॉट हिडन विच इज ओ माई गॉड दे आर मोर वर्ड्स आई थॉट कि हो गया बट आई थिंक अब अभी के लिए इतना ही रखते हैं कल दोपहर को 2 बजे हम मिल ही रहे हैं तो मे बी वी विल डू द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स टुमारो कल शुरुआत इजी वाले से करेंगे फिर धीरे धीरे दोपहर को वी विल मूव ऑन टू द डिफिकल्ट वंस आज शुरुआत डिफिकल्ट से किया और वी मूव ऑन टू द इजियर वंस ऑलराइट गाइस तो अभी के लिए साइन आउट करते हैं बिफोर दैट लेट मी टेल यू अबाउट द सब्सक्रिप्शन प्लान्स वी हैव द प्लस एंड द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फॉर यू in plus you get live classes weekly tests structured courses unlimited access and study material in iconic you get everything that comes with plus along with which there is personal guidance study planner experts guidance and test analysis as well. These are the price points for plus 6 months, 18 months, and 24 months. It's 16,400, 28,550, and 32,800. For Iconic, 6 months, 12 months, and 24 months, 25,800, 39,500, 59,999. You can use my code SharmaJi and get 10% off. And if you are a student who appeared in CAT last year, got 80 percentile or above, then also you can use the code SharmaJi and get 30% off. The PI and WAT thing we are going to cover in SC. वो SC में करेंगे. Yes, yes, ma'am. Covered is also a word. Yes, it is. All right, guys. So I will see you tomorrow. Take care.
Thank you, Zero That's the name. Take care. Have a good night. Bye.